गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नीति आयोग रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ने एक एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है, जिसका टाइटल है फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस। तो ये रिपोर्ट जो है एक ब्लूप्रिंट दे रही है कंट्री को कि अगर फ्यूचर में कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या पैंडेमिक आती है तो उसे कैसे डील किया जाए। तो कोविड जो है, अब ये समझ आ गया लोगों को कि ये लास्ट पैंडमिक तो नहीं है। WHO भी इवन वार्न कर रहा है कि 75% जो फ्यूचर पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स होंगे वो जूनोटिक थ्रेट्स से एमर्ज होंगे। तो इसी को ही रिकग्नाइज करते हुए जून 2023 में नीति आयोग ने फ्यूचर पैंडमिक्स से डील करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो फॉर्म किया, और इनको कहा गया कि एक फ्रेमवर्क फॉर एक्शन दो कि कैसे हम फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। तो इन्होंने एनालाइज़ किया कि दुनिया में और नेशनली भी हमने कोविड-19 को कैसे डील किया है, और उसके हिसाब से ही इन्होंने कुछ पिन पॉइंट करके स्ट्रेटजीज जो है वो हमको दी हैं। ठीक है। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए। रिपोर्ट ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे चाहे वो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट हो या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों जो है वो एक्चुअल में डिसीजेज से डील करने के लिए नहीं बने हैं। इवन जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है उसमें तो की टर्म्स ही नहीं है, मतलब डेंजरस या इन्फेक्शियस डिजीजेज डिफाइन ही नहीं की गई है। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, वो सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बनाया गया है। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट बनाया जाए ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर हो सके कि वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके इन केस ऑफ सच इमरजेंसीज। तो पब्लिक हेल्थ एजेंसीज को अर्जेंट एक्शन पावर्स देने की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया जाए जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करे। तो ये जो है इवन नॉन क्राइसिस पीरियड में भी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना, फाइनेंस, R&D, सर्वेलेंस, पार्टनरशिप, इन सब के ऊपर जो है वो काम करे, ताकि हम अपने आप को जितना भी हो सके फ्यूचर प्रूफ कर सके। यही जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाएगा कि अगर कभी पेंडेमिक की सिचुएशन आती है तो कैसे डील किया जाए उसे। तो ये सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कह रहे हैं कि इंडिया का जो डिसीज सर्वेलेंस नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। फिर नेशनल बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी नेटवर्क जो है वो बनाए जाएँ। ठीक है। एक इमरजेंसी वैक्सीन बैंक बनाया जाए जिससे कि जो है वैक्सीन डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जो है वो सोर्स की जा सकेंगी। ठीक है। तो एक कहा जा रहा है कि एक एपिडेमोलॉजी फोरकास्टिंग और मॉडलिंग नेटवर्क होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन डायनामिक्स को हम समझ सकें फ्यूचर में। एक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं ताकि रिसर्च जो है वो प्रायोरिटी हम दे सकें। ठीक है। डायग्नोस्टिक्स, थेरेपेटिक्स, वैक्सीन्स का नेटवर्क पूरा होना चाहिए कंट्री में। फिर एक कहा गया है कि एक रॉबस्ट क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क बनाने के लिए हमें जो है CDSCO को एक इंडिपेंडेंट बॉडी विद स्पेशल पावर्स बनाना ज़रूरी है। और भी कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जैसे कि पहले पहले 100 डेज में क्या करना है अगर कोई आउटब्रेक ऐसी होती है तो। फिर पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स को हमें रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज़ में एक्सपैंड करना है। रॉबस्ट सप्लाई चेन जो है एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज़ का होना चाहिए कंट्री में। टेक्नोलॉजी और डेटा शेयरिंग को कैसे लीवरेज किया जा सकता है, और उससे ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन और स्विफ्ट एक्शन कैसे इंश्योर किया जा सकता है, ये भी रिकमेंडेशंस में बताया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत जन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत जन एक इनिशिएटिव है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है, जो कि जनरेटिव AI सिस्टम जो है वो क्रिएट करेगा, तो जो फिर हाई क्वालिटी टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट हमें अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में दे सकेगा। ठीक है। तो ये पहला गवर्नमेंट सपोर्टेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव है जिसको IIT बॉम्बे इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के साथ के प्रोग्राम के अंडर। तो इसमें मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल नेचर बनाना, फाउंडेशनल मॉडल्स बनाना, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना उससे फ्यूचर में के लिए, ताकि सभी उसके ऊपर जो है वो काम काम कर सकें। और इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट का एम है। तो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं? तो ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि प्रोसेस और जनरेट की जा सके मल्टीपल मोडालिटीज़। इनको ट्रेन किया जाता है लार्ज डेटा सेट्स पे। इनको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है, चाहे इमेज कैप्शनिंग के लिए, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, कंटेंट रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने सेकेंड फेज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है ताकि कैपेबिलिटीज़ जो हैं 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप के उसको एनहेंस किया जा सके। तो ये 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप एक रेडियो टेलीस्कोप है चाइना के गुइजू प्रोविंस में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। 500 मीटर का डायमीटर में है ये, और इसका गोल है कि ये डिटेक्ट करना चाहता है न्यूट्रल हाइड्रोजन को जो कि एज ऑफ द यूनिवर्स पर है। फिर पल्सर्स को डिस्कवर करना, हाई रेजोल्यूशन रेडियो स्पेक्ट्रल सर्वेस करना, फिर ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को भी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी सर्च में। वीक स्पेस सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड डे जो है ऑफ नेशनल लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव वर्कशॉप चल रहा है अभी ऑन सस्टेनेबल ऑयल पाम कल्टीवेशन पर अंडर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम। ये मिशन जो है 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि सब्सटेंशियल इंक्रीज़ किया जा सके ऑयल पाम कल्टीवेशन में और क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन में। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्पेशल फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर। इसका ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एरिया ऑफ पाम ऑयल को 10 लाख हेक्टेयर्स तक जो है पहुंचाया जा सके, जो कि 3.5 लाख हेक्टेयर्स था ड्यूरिंग 2019-20 पीरियड। क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन को जो है वो 11.20 लाख टन तक पहुंचाया जा सके 2025-26 पीरियड तक। तो इसमें जो है कैसे ये सब पॉसिबल हो पाएगा, जो है असिस्टेंस दिया जाएगा ऑफ कोर्स प्लांटिंग मटेरियल के लिए, इनपुट्स के लिए जो कि इंटरक्रॉपिंग में हेल्प करें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने रिसेंटली डेवलप किया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट जिसकी हाई कंडक्टिविटी, फॉर्मेबिलिटी और इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं जब वो डिसॉल्व होते हैं फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड या यूरिन में। तो ये मोस्ट हमारे जो फेमिलियर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स होते हैं जो आयोनाइज हो जाते हैं जब इनको किसी भी सॉल्वेंट जैसे वाटर या अल्कोहल में जो है वो मिक्स किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है बॉडी में तो होता है जब, तो कई मिनरल्स बॉडी में जब नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से किडनी डिसीज़ होना या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रोलाइट पैनल जो है बॉडी में ब्लड टेस्ट में मेजर करता है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, तो उसी के बेसिस पर ही जो है बॉडी की हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एल्जाइमर्स डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एल्जाइमर्स डिसीज़ जो कि एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है ये, खासकर एजिंग पॉपुलेशन में, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये एक ब्रेन कंडीशन होती है जिसमें प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखने को मिलता है मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स में। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया है ये। लगभग 60 से 80% जो डिमेंशिया केसेस हैं वो अल्जाइमर्स डिसीज़ में ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो कि कंट्रोल करते हैं थॉट, मेमोरी और लैंग्वेज को, ये उसको अफेक्ट करता है। ये कंडीशन जनरली 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज में जो है लोगों में देखने को मिलती है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अर्ली साइंस में हमें देखने को मिलता है कि लोग भूलना लगते हैं, कन्वर्सेशंस को भूलने लगते हैं, रीसेंट इवेंट्स को भूलने लगते हैं, और ये सीरियस मेमोरी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगता है। इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ मेडिकेशंस और थेरेपीज से सिम्टम्स को टेम्परेरीली मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अन्न दर्पण प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कोफोर्ज लिमिटेड नाम की कंपनी को सिलेक्ट किया है सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अन्न दर्पण के अंडर। ठीक है, तो अन्न दर्पण एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्ट्रीमलाइन और एनहेंस किया जा रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को वेरियस लेवल्स पर। ये सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा है इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को। ये इनेबल करेगा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और एज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कोफोर्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड टू एंड डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ अन्न दर्पण सिस्टम। ठीक है, डेवलपमेंट टीम जो है वो लीवरेज करेगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को और स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जय ही अमृत स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है जय ही अमृत स्कीम को विद इन फर्स्ट 100 डेज,
और जय ही अमृत स्कीम जो है ये अमृत 2.0 के अंदर ही जो है वो लॉन्च की गई है। और इस इनिशिएटिव के अंदर इंसेंटिवाइज किया जा रहा है स्टेट्स और यूटीज़ को कि वो अपने वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज कर सके। पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है कि कंपटीशन बिल्ड करना अमंग द सिटीज़। मेन फोकस जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और इंसेंटिवाइज करने पर रहेगा, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स को, डिस्चार्ज को, जो ट्रीटमेंट है उसको सही से मैनेज करने पर। ठीक है, तो अमृत 2.0 स्कीम जो है वो 5 साल के लिए लॉन्च की गई थी, 2025 से 2026 पीरियड तक के लिए। और ये यूनिवर्सल कवरेज देना चाहती है गवर्नमेंट जो है सभी स्टैट्यूटरी टाउन्स में वाटर सप्लाई का थ्रू फंक्शनल टैप्स, ठीक है, सभी हाउस होल्ड्स को। और एक सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को भी प्रमोट करना चाहती है। ओके, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is Niti Aayog's report on future pandemic preparedness. This topic is important for your governance section. So Niti Aayog has recently released an expert group report titled the Future Pandemic Preparedness and Emergency Response. And this report has provided a blueprint for the country to prepare for any future public health emergency or pandemic and have a rapid response system in place. So we all know that COVID has awakened us that this is not the last pandemic, and WHO has also warned that the future public health threats, and 75% of such threats are likely to be zoonotic threats, which means that they will emerge from the animals. So in June 2023, recognizing this threat, Niti Aayog constituted an expert group, and this expert group was created to provide a framework for action for future pandemic preparedness. And the key task of this expert group was to analyze how COVID-19 was managed both nationally and globally, and identify those lessons which were learned from the successes and challenges. So this group aimed to pinpoint the gaps in response strategies and to enhance preparedness for future public health emergencies. So, what are the key recommendations of this report? So, this report has highlighted the limitations of the existing legal framework, especially with respect to Epidemic Diseases Act of 1897 and the National Disaster Management Act of 2005. So, this report has highlighted that the Epidemic Diseases Act lacks definition for key terms like dangerous or infectious diseases. Similarly, the National Disaster Management Act was not designed to manage health emergencies, but it was only or primarily designed to focus on natural disasters. So, to address these gaps, the report recommends enacting a new Public Health Emergency Management Act, and this law would empower central and state governments to respond effectively to pandemics and other health emergencies. So, the Emergency Management Act would equip public health agencies with urgent action powers and create trained public health cadres at national and state levels to act as first responders. So it also has proposed the establishment of a empowered group of secretaries headed by the cabinet secretary to oversee public health emergencies, emergency preparedness and response. So this committee will operate during non-crisis periods to strengthen governance, finance, R&D, surveillance and partnerships. And this empowered group of secretaries will also create standard operating procedures for handling the pandemics. So this report has also emphasized the need to strengthen India's disease surveillance network, establishing a national biosecurity and biosafety framework or network, and it has also called for creation of an emergency vaccine bank which would be utilized for the vaccines domestically or internationally, and it would act as a source for them. So this report has also advocated for creating an epidemiology forecasting and modeling network so as to predict the future transmission dynamics of infectious diseases. And it has also called for a network of centers of excellence focusing on research priority pathogens. And it has said that these centers of excellence would work on diagnostics, therapeutics, and vaccines for priority pathogens, which have been identified by the WHO. Okay, so it has also said that there is a need to make CDSCO as an independent body with special powers so as to establish a robust clinical trial network in India. And there are some other recommendations as well. So for example, it has said that
The first 100 days of an outbreak are crucial for effective management. So, there is a need for a rapid response system to be fully operational within the first 100 days of an outbreak. It has also said that expanding and enhancing the public health workforce, especially in rural and underserved areas, is important. We also need to develop a robust supply chain for essential medical supplies in the country. Uh, Leveraging technology and data sharing frameworks will ensure transparency, coordination, and swift action. So the next topic is Bharat Gen. This topic is important for your governance. I'm sorry, science and tech section. So Bharat Gen initiative was launched by the Union Ministry for Science and Technology, and the aim is to create generative AI systems that can generate high quality text and multimodal content in various Indian languages. This is the first government supported multimodal large language model initiative, which is implemented by IIT Bombay under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems. And the aim is to make this platform open source, and this project is expected to be completed in 2 years. Okay, what is multimodal large language model? It is designed to process and generate multiple modalities, and these models are trained on large data sets, and they can be used in many ways like image captioning, visual question answering, content recommendations. Okay, so the next topic is 500-meter aperture spherical telescope. This topic is important for your science and tech section. So China has kicked off a second phase of construction to enhance the capabilities of the 500-meter aperture spherical telescope. This is a radio telescope in China's Guizhou province. It is the world's largest and most sensitive radio telescope with a receiving area equivalent to 30 football fields. It measures 500 meters in diameter. It will basically detect neutral hydrogen at the edge of the universe, reconstruct the images of the early universe. It will discover pulsars, establishing a pulsar timing array, and participate in pulsar navigation. It will also perform high resolution radio spectral survey, and it will participate in the search for extraterrestrial intelligence as well. So the next topic is National Mission on Edible Oils, oil palm. This topic is important for your economy section. So the second day of a national level multi-stakeholder consultative workshop on sustainable oil palm cultivation under the National Mission on Edible Oils, oil palm was held recently. It was this national mission for edible oils was launched by the government in 2021, and it targets a substantial increase in oil palm cultivation and crude palm oil production. So it is a centrally sponsored scheme with a special focus on northeastern region and Andaman and Nicobar Islands. So the target is to increase the area of oil palm to 10 lakh hectares from 3.5 lakh hectares during 2019-20 period by 2025 2026. So the aim is also to increase the crude palm oil production to 11.20 lakh tons by 2025-2026 period. And the features of this mission include assistance for planting materials, input for intercropping up to a gestation period of 4 years, and for maintenance, and the establishment of seed gardens, nurseries, micro irrigation, bore, well pump, etc. Okay. So the next topic is electrolyte. This topic is important for your science and tech section. So researchers have recently developed an electrolyte with high conductivity, formability, and electrochemical stability. Electrolytes are basically those minerals which give off an electrical charge when they dissolve in fluids like blood and urine. The most familiar electrolytes are acids, bases, and salts, which ionize when dissolved in such solvents as water or alcohol. And many salts, like sodium chloride, behave as electrolyte when melted in the absence of any solvent. So, electrolytes in our work in our blood, tissue, urine, and other bodily fluids, and they play a critical role in balancing bodily fluids, regulating our heart rhythm, and supporting nerve and muscle function. Any kind of electrolyte balance imbalance occurs when you have too much or not enough of certain minerals in your body, and this may be a sign of a problem like kidney disease. An electrolyte panel is a blood test that measures electrolyte levels as well. Okay. So the next topic is Alzheimer's disease. This topic is important for your social issues. So Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disorder which poses a significant global health challenge, particularly as the aging population is continuously growing.
So, Alzheimer's disease is a brain condition which causes a progressive decline in memory, thinking, learning, and organizing skills. It is the most common type of dementia, accounting for 60 to 80% of all dementia cases. It involves part of the brain which controls thought, memory, and language, and it can seriously affect a person's ability to carry out daily activities. The condition usually affects people aged 65 years and above, and the exact cause of Alzheimer's disease is not fully understood. The early signs of this disease include forgetting recent events or conversations, and over time, it progresses to serious memory problems and loss of the ability to perform everyday tasks. Currently, there is no cure for Alzheimer's, but of course, certain medications and therapeutics can help manage these symptoms temporarily. So the next topic is Annadarpan scheme or Annadarpan project. So this topic is important for your governance section. So recently, Food Corporation of India has selected Coforge Limited as the system integrator for its digital transformation project called the Annadarpan. So this project aims to streamline and enhance the supply chain management system at the various levels. This system will be designed to improve efficiency and productivity by creating an interactive and user-friendly UI design. It will also enable data-driven decision making, and as part of this project, this Coforge Limited will be responsible for the end-to-end design, development, implementation, and maintenance of the Annadarpan system. The development team will also leverage the best technology and latest technology and a state-of-the-art IT environment to build a cloud-based platform for hosting this system. So the next topic is Jai Hi Amrit scheme. This topic is important for your governance section. So recently, Union Minister of Housing and Urban Affairs has said that government has launched the Jai Hi Amrit scheme in the first 100 days. So Jai Hi Amrit program was launched under the Amrit 2.0 scheme, and it envisages the incentivization of states and UTs to manage the used water or sewage treatment plants effectively or if efficiently. The purpose of the exercise is to build competition among the cities, develop capacities, and incentivize them to attain the best quality of used treated water at the treatment facilities. The main focus is on capacity building and incentivizing qualitative improvements in the treated discharge effluent. So, what is Amrit 2.0 scheme? It was launched for a period of 5 years, from 2021 to 2022 period to 2025-26 period, and it is designed to provide universal coverage of water supply through functional taps to all households in all the statutory towns in the country. And this scheme aims to promote a circular economy of water by developing the city water balance plan for each city, focusing on recycling or reusing the treated sewage, rejuvenating water bodies, and water conservation as well. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.